This conference will now be recorded. Actually, it will be an introduction to laboratory design, and what I would like to during that this webinar is first really present the basis of laboratory design for biosafety purpose. So we are really looking at biological labs, and in particular, according to the new WHO manual, I want to distinguish and present the features required in all biological laboratories, and then some others that could be needed based on biological risk assessment. Also, I want to explain some important practical aspects related to risk control measures that are the most frequently used in laboratory design. And doing that, I will keep in mind the particularity of Pakistan with respect to feasibility and sustainability. In Pakistan, there might be some lack of resources, especially in some regions, and we need to also take that into account when designing a new lab. So your learning objectives should be first to become able to explain the core biosafety requirements of all biological labs. So you should know and be able to explain what is needed in all biological labs. Then you should also be able to distinguish from these the core biosafety requirement needed in all labs and some additional features that could possibly be needed based on risk assessment. You should also be able to explain the rationale for those control measures and possible issues related to their implementations, to their use. And then also you should become able to advocate the importance of good and sustainable laboratory design versus possibly non-necessary sophisticated design proposal. If you deal with architects and engineers to build a new lab, they will always come up with some sophisticated measures and so on. You should be able to explain them what you need and also ask for quite simple things that should respond to your needs. So you will certainly not become engineers and architects after such a training, but I hope that you can become more intelligent customers with respect to laboratory design. That means being able to explain your needs and also refuse things that are not really useful for your activities. So the basis for this webinar series is the new Laboratory Biosafety Manual by WHO that was published at the end of the last year. Also, of course, I have some experience in laboratory design, both in developed countries, Belgium, Europe, and some other parts, but also in lower resource countries. And from that experience, I can tell you one important thing is that there are many limitations in the operation of a lab or in a biosafety of a lab that can be due to two main aspects. First, a poor laboratory design, so design which are not well designed, and also problems with labs that have too sophisticated technical solutions. And in that case, it poses problem, both in low resource countries, but also in rich countries, I would say. Also, you see on the right-hand side that there is the main monograph on the laboratory safety manual. There is a specific one on laboratory design and maintenance. In this webinar, I will not talk much about maintenance. It will be really focused on laboratory design. So what does WHO say about biorisk management? First, biological risks need to be managed through a practical, risk-based and evidence-based approach. So it's not based on some codes and some rules and so on. It needs to be controlled using a very pragmatic approach, I would say. Then the basis for biorisk management is biological risk assessment. You cannot control risk properly if you don't know the nature and the importance of the risk. And that biological risk assessment needs to be to involve a number of different aspects. Of course, the biological agent and their main characteristics, but also the activities. Doing one thing with a biological agent will not generate the same risk as doing something else with the same biological agent. And then the epidemiological medical context in the place where you're working. Also human factors like the training of the people, do they have experience and so on. And also the local availability of technical and logistic resources.
So it's not just looking at the agent, it's also looking at all those aspects. Also, an idea of WHO is that we need some flexibility in the implementation of solutions. They need to be adapted to the needs, they need to respond to needs, and to be adapted to the situation, and to be sustainable. And for that, we'll need to think about also about local resources. And then, according to WHO, risk control is mostly based on work practices, personal protective equipment, and training of the people who work in the lab. And WHO clearly says that it's more like that than based on laboratory design or engineering controls. So the kind of classical hierarchy of measures, which puts engineering controls at the top, and then PPE, and then work practices, is something that WHO goes against. According to WHO, risk control should be mostly based on work practices, personal protective, and training. So all of you should have attended the webinar on risk assessment, so you know this this graph quite well. I will go through it quite rapidly. So if you look at the green part, that's for low to moderate risk. Is when the likelihood of exposure is relatively moderate, and in case of exposure, the consequences of the exposure will also be quite moderate. In yellow, you have a higher level of risk because the likelihood of exposure or release is higher, but also the consequence would be more severe. And in red, that's the extremely high likelihood and extremely high consequences. And so that's really something which is highly hazardous, highly risky. Actually, for the part in green that represent most of the laboratory activities, core requirements are sufficient to ensure a good level of biosafety. For the yellow part, you need those core requirements, but in addition to that, you might need some high control measures. For maximum containment measures, that's only for a minority of the lab center. And in this talk, in this webinar, we'll only cover the core requirements and the technical control measures. And in taking care of that, we cover more than 99.9% of the needs. So the consequences of adopting the laboratory biosafety manual as a reference: first, you should be more or less familiar with the risk assessment approach, because that's really the basis for laboratory design. Also, in webinar, I will not make any reference to biosafety levels, except right now, just to connect you with situations that you may know. So core requirements would correspond more or less to what is done in most BSL2 labs. Heightened control measures are measures that are sometimes applied in the equivalent of some higher risk BSL2 labs and all BSL3 labs. And the maximum containment measures, that's equivalent to BSL4. Okay, and again, if we concentrate on the core requirements and some control containment measures, in that case, we cover more than 99.9% of the needs of the labs. So the general standpoint for this webinar is that the purpose of, and it's come from WHO, is that the purpose of laboratory design is only to facilitate safe laboratory operation. It's not the purpose to have a nice fancy laboratory and so on. The purpose of the laboratory design is to have a lab that allows safe laboratory operations. Another principle, which is, I think, very important, is to keep things simple, to think in a very pragmatic way. And that's what we call the KISS principle: keep it simple and smart. So when a number of solutions could be applied, in that case, it's generally better to choose something simple that you can control in the future and that is more sustainable. Also, all the design features need to be justified. And how is that justified? Mainly by risk assessment. And they should also be fit for the purpose, so respond to your needs. And they should be sustainable, meaning that it's not just for today, tomorrow, it should also work in the long time.
Still, an important remark, when we deal with laboratory design for biosafety lab, we need to take into consideration a number of possible other requirements and standards. For instance, the building codes, including possible local requirements that will also the fire and other safety codes, electrical safety rules, and so on there. So you need to add those requirements to the biosafety needs, I would say. You might also have we want to apply some quality standards, for instance, for certification. In that case, you need also to take that into account. And in countries where there are biosafety regulations, of course, biosafety regulations should also be taken into account. And all those requirements should be clearly identified at the start of a project. That's something which is very important. So this has to deal with legal compliance, and WHO clearly says that you need to take care of that also. So you need to add that to the needs, the operational needs and biosafety needs. So the contents of this webinar today will, after this introduction, we'll only look at core requirements. That means the requirements that will be applied in all biological labs. Then during the next session on October 26th, next week, we'll look at high control measures and their application, and also draw some conclusions. And then there will be a third session on November 3, and that's to answer the questions you might have. So as Faria said, you're free to invite to ask your questions in the chat box. I will probably not be able to answer immediately to those questions, but I will keep them for that third session on November 3. Okay, now it's time for a summary. So Javed, would you please do that? आज हम जो हमारा सेशन है वो हम किस तरह एक लेबॉरेटरी को डिज़ाइन कर सकते हैं उस हवाले से है। अब इसमें हमारे पास जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारे पास जितनी भी बायोलॉजिकल लेबॉरेटरीज है उन सब की जो है ना हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हम जो ख़तरात हम उसकी तशख़ीस करते हैं लेबॉरेटरी में, उसकी बेस पे अगर मज़ीद हमें कुछ बेहतर चीज़ें चाहिए तो उस हवाले से भी हम इस वर्कशॉप में जो है ना वो कोशिश करेंगे कि वो हम कवर कर लें। अब हमारे इस वर्कशॉप का जो है ना वो जो मकासद है वो ये है कि एक तो आप लोगों को बुनियादी ज़रूरियात लेबॉरेटरी जब आप डिज़ाइन करते हैं वो आप लोगों को पता चले, और दूसरा ये है कि हम अगर मज़ीद उस बुनियादी ज़रूरियात में और क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए कि हम ख़तरनाक जरासीम से जो है ना या इंतहाई ख़तरनाक जरासीम से जो है ना वो हम काम कर सके। तो उसमें आखिर में ये है कि कम से कम आप जितने भी है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को जो चीज़ें वाकई हमारे लैब में ज़रूरत है और जो गैर ज़रूरी है उसके बारे में जो है ना वो आप लोगों को आगाही हो। और आप लोग जो है ना कोई भी आप लोगों के लिए लेबॉरेटरी डिज़ाइन करना चाहें तो कम से कम आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि मेरे लेबॉरेटरी में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो चाहिए। ये जो वर्कशॉप है ये रिसेंटली जो WHO बायोसेफ्टी जो मैनुअल है उनके उस पे जो है ना उस बेस पे ये बना हुआ है, और डॉक्टर फिलिप स्ट्रूट जो कि तकरीबन 20 साल से जो है ना वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं डिजाइनिंग, और बहुत सारे मुल्कों में जो है ना ये काम कर रहे हैं। और इस के थ्रू जो है ना वो इस वेबिनार के थ्रू आप लोगों को ये इस बात की आगाही होगी कि कौन से लेबॉरेटरीज हैं जो कि बहुत पूर्ली जो है ना वो नाकिस तरीके से जो है ना वो उनकी तामीर हुई है, और कौन सी ऐसी लेबॉरेटरीज है कि जिसमें गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो शामिल की गई है डिज़ाइनिंग के दौरान। अब उसमें जो है ना वो जो WHO का जो नया बायोसेफ्टी का मैनुअल है वो आपसे जो है ना वो ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा जो है ना वो खतरों को जो है ना वो उसकी तशख़ीस करनी है और उसके जो है ना शवाहिद इकट्ठे करने हैं, और उसके हिसाब से आपने अपने लिए हिफाजती इक़दामात जो है ना वो इख्तियार करने हैं। और इस दौरान वो कहते हैं, WHO कहते हैं कि वो जब भी आप खतरों की जो है ना वो तशख़ीस करते हैं तो सिर्फ उन जरासीम को आप लोगों ने मद्देनज़र नहीं रखना। जितनी भी हमारे लोकल रिसोर्सेज है जो यहाँ पे इंसान काम कर जो उस लेबॉरेटरी में इंसान काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है ना वो माइंड में रखने होते हैं। और जब भी उस खतरे को जो है ना वो हमने कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए जो पहली चीज़ आती है हमारे माइंड में वो है कि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें,
अपनी ट्रेनिंग ले ले और उसके हिसाब से जो है ना वो जो हिफाजती हमारे जो आलात है जो उसमें जो है ना वो हमारे पास ग्लव्स और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम उनको जो है ना वो इख्तियार करें। तो इस हवाले से अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो WHO नॉर्मली हमारी हायरार्की ये होती है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारा सबसे पहले होता है, फिर हमारे पास लास्ट में हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो आते हैं। लेकिन WHO इस बार कह रहे हैं कि आप लोगों ने जितनी भी है वो खतरों की पहले तशखीस करनी है और उसके मुताबिक जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो कवर करना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो लेबॉर्ट्री हमेशा नॉर्मली 3 एरियाज पे मुश्तमिल होती है। एक ग्रीन एरिया जो आप लोगों को सबसे जो एरिया आप लोगों को नजर आ रही है वो ये है कि वहां पे आप तकरीबन आप अपने आप को बाहिफाजत समझते हैं। आप मतलब कि जो जरासीम है उनको जो है ना वो एक्सपोज होना जो है ना वो उसके असर जो चांसेस है वो कम होते हैं। येलो में देखें तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और रेड में जो है ना वो इंतहाई खतरनाक जरासीम से आप खेल रहे होते हैं और उसमें जो है ना वो एक्सपोज होने के चांसेस भी जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। इस वर्कशॉप में हम नॉर्मली जो है ना ये येलो और ग्रीन एरिया को जो है ना वो कवर करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं अगर आप इन 2 एरियाज में काम कर रहे होंगे। और ये अगर देखा जाए तो इन 2 एरियाज को भी कवर करने के लिए जो है ना जो हमारी लेबॉर्ट्री की बुनियादी जरूरियात है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे उसी को अगर हम फॉलो करें तब भी जो है ना हम इन 2 एरियाज को कवर कर सकते हैं। WHO इस बार जो नया मैनुअल है उसमें हमेशा जो हमारा पहले कंसेप्ट होता था कि बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, 3, 4 वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपसे हर बार यही कहते हैं कि आप लोग हमेशा खतरों की तशखीस करें और उसके हिसाब से अपने आप को जो है ना वो हिफाजती इकदामात को जो है ना वो इख्तियार करें। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में बता दूं अगर सादा अल्फाज में मैं बता दूं तो जो बुनियादी जरूरियात है वो तकरीबन बायोसेफ्टी लेवल 2 के जो हमारा कंसेप्ट होता था उस डिजाइन को जो है ना वो कवर करता है और उसको हम मजीद थोड़ा सा बेहतर बनाए तो बायोसेफ्टी लेवल 3 बन जाती है और अगर इंतहाई जो सख्त इकदाम हम ले लें तो वो बायोसेफ्टी लेवल 4। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना ये इस तरह की जो वर्ड्स है ये यूज होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 99% जो है ना वो हमारा जो बुनियादी जरूरियात है वो अगर हम उनको भी फॉलो करें तो हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो अच्छी तरीके से जो है ना वो हम डिजाइन कर सकते हैं। और उसकी डिजाइनिंग का मेन मकसद ये होता है कि आप अच्छी तरीके से ऑपरेशन जितनी भी आपके काम है वो आप करें और उसमें जो है ना ये चीज माइंड में रखा जाए कि आप जितनी भी एक चीज को सादा रखेंगे और जितना उसकी जो है ना वो होशियारी से उसको जो है ना वो रखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे उतने जो है ना वो आप लोगों की आसानी होगी। अब इसमें जो है ना जो बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि एक WHO तो आप लोगों के लिए गाइडलाइन बना देते हैं वो एक हिदायत बना देते हैं लेकिन आप लोगों की मुल्क की जो कानून है उसे आप लोग कम से कम जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों ने उसको माइंड में रखना है और उसके हिसाब से आप लोगों ने WHO और जो हमारी इलाके की हमारे मुल्क की जो कानून है उनकी जो गाइडलाइन है उन दोनों को आप लोगों ने कंबाइन करके और आप लोगों ने उसी हिसाब से लेबॉर्ट्री डिजाइन करनी होती है। उसमें आप मजीद बेहतरी ला सकते हैं जिस तरह ये ISO सर्टिफिकेशन या इस तरह की डिफरेंट सर्टिफिकेशन है उस हवाले से आप लोग उसके हिसाब से जो है ना वो अपनी लेबॉर्ट्री को मजीद जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखा जाए ये सारा काम आप लोगों की जब आप लेबॉर्ट्री डिजाइन करते हैं उसके स्टार्ट में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और इनलिस्टेड होनी चाहिए। और इसके लिए जो है ना वो हमेशा किसी एक्सपर्ट किसी ऐसे बंदे को जिन्हें इन चीजों का इल्म हो उसके बाद उसके साथ जो है ना वो कंसल्ट किया जाए और वो जो है ना ये सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों के साथ समराइज करे और आप लोगों को जो है ना वो जो लेबॉर्ट्री डिजाइनिंग है वो उसकी स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करे। ये जो हमारी वर्कशॉप की सीरीज है ये 3 है। इस वर्कशॉप में हम थोड़ा सा जो बुनियादी जरूरियात है और उसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे अगले में ये जो हाइट एंड कंट्रोल की हम बात कर रहे थे जिसको हम बुनियादी जरूरियात को अगर हम मजीद बेहतर बना सके कि अगर हम थोड़े से मजीद खतरनाक जरासीम के साथ काम करेंगे और उसके लिए हम किस तरह लेबॉर्ट्री डिजाइन करेंगे उसके बारे में जो है ना हम केस स्टडीज वगैरह और ये सारी चीजें करेंगे। इस दौरान ये ख्याल रखिए अगर आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल आता है आप लोग ये चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। इसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग जो है ना वो हमें जो है ना हमसे पूछ सकते हैं। हम उसी वक्त भी शायद आप लोगों को आंसर दे दे। अगर ना दे सके तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो नोट डाउन हो रहे हैं और आखिरी से जो सेशन है वो उसमें हम तमाम क्वेश्चंस को जो है ना वो कोशिश करेंगे कि आंसर दे सके। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर फिलिप द फ्लोर इज योर। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Javel, for this summary. You said a lot of things in a small amount of time. So let's now look at the core requirements and their applications. So what are the core requirements? First, we need to remember that
with the core requirements, we respond to more than 99.9% of the needs. So these are actually the core requirements are a set of minimum requirements that should be applied to all laboratories where there is some biological risk. So according to WHO, the core requirement consists of a number of things, like good work practices and procedures, personal protective equipment, personnel competence and training, and WHO insists on this one because it's really something which is extremely important. Then facility design, and also some specific aspects like the receipt, storage, and shipment of specimen, the transport of specimen. Then also all aspects of decontamination and also waste management. Then the laboratory equipment and their management, which is in close relation with laboratory design. Also emerging and incident response and the preparedness for that, and occupational health. So you see there are a number of core requirements. And if you look at this, you see that facility design is only part of that. And according to the WHO, it's not the main part. It's the part that actually should make it, should facilitate good work practices and procedures. So what are the core biosafety requirements for laboratory design? First, you need to have some dedicated space for laboratory activities. That means that laboratory activities need to be separated from other activities. Should be separated, for instance, for the place where you eat and drink. So laboratories should be for laboratory activities. And then you should have enough space for laboratory work, but also for storage and also for moving into the labs. Then you should have hand wash facilities, so a hand washing sink. That's an obligation. It's a core requirement. You should have a biohazard labeling, so to show that there is some biological risk in the lab. You should have some restricted access, and I will explain a little bit more about that. And then most of the things in the lab and furniture and equipment and so on should be clean and easy to disinfect, easy to clean and disinfect. You should have sufficient laboratory lighting. You should also have some laboratory ventilation, and this is a quite tricky issue, and I will explain more about that. And also provision for waste management. This together with all the other requirements which are not directly related to biosafety, like electricity, fire safety, chemical safety codes, and so on. If you look at those requirements, there is nothing fancy. Those are quite basic requirements, I would say. It's something that you would expect in all the labs. According to WHO, in applying this to most of the labs, that is sufficient to have a good control of the risk, provided, of course, you have the right to work. So remember that the work practices are the most important. With respect to laboratory space, there is a very useful general principle. It's the principle of risk segregation. According to that principle, we separate lab activities from the other activities. And so, for instance, the labs, the access to the lab would be separate from offices. Office will be outside of the labs, but it should not be accessible to the patient, for instance. So if you need to take samples on patient, it should be done in another place, not in the lab. And also, of course, from eating, drinking, meeting places, and so on. But then you could go further into segregation in separating some activities according to their nature in order to facilitate operation and to facilitate risk control. For instance, you could separate hazardous from non-hazardous activities. Please keep your microphone on mute. Also, separate chemical activities from your bacterial or viral culture in order that chemicals do not disturb those culture. If you have some activities that need a high level of product protection, in that case, you could also separate them further. And then also separate long-term storage from the storage in your laboratory. Why do we segregate like this? Because in general, it is much easier to focus on one risk and to control well one risk, to deal with one issue in a limited space,
rather than dealing with a number of issues in a very large space. So it will be much easier to have very good bacterial and viral culture in a small room and to have all the other activities related to those cultures done in another room, as an example. So keep in mind that it's always easier and also less expensive to deal with a few issues in a limited space than with numerous issues in a large work environment. And this is something we need to keep in mind when we start designing labs. We should plan for sufficient space. That means space to work, of course, but also to move safely. Moving safely, that means we reduce the risk of place your microphone on mute. Also, sufficient space for lab equipment, disposable material and PPE, for instance. Don't underestimate that. Lab equipment that takes some place, and over time you might need to have more equipment. And you also need to have dedicated storage space. And that's what we generally try to do, is we keep in the lab the things that we need on a daily basis, I would say, and we have a remote long-term storage for all the other things that you don't use all the time. Remember also, when you plan for new labs, you also need to consider future needs, including with respect to space, because you might have some extension activities, you might have more people, more equipment, and so on. And then you need to organize space. And for that, we should consider the personnel flow, but also the flow of specimen, materials, waste, and waste. You should need think about how those materials will enter the lab and how you will eliminate waste. And you should also apply another principle, which is the principle of space zonation. I will explain a bit more about that now. So one point which is important, when you organize the lab, most of the time we do it based on the activities, of course, but also on the location of the main equipment and systems that are required to work in the lab. Some big equipment like biosafety cabinet, if you need one, like autoclaves and so on, in locating them first, you can organize the lab around them. In doing that, you need to think about ergonomics to favor comfort of work, but also avoid useless moves and reduce the risk of incident and accident. So for instance, if you use a biosafety cabinet together with some incubator, you will try to have them next to each other so that you don't have to move a long way with your culture before reaching the incubator. That will reduce the risk of spill, for instance. And so that principle of space zonation, you try to locate the most risky, most hazardous activities in a place that limits the effective risk for most of the people in the lab. The main application is that you will locate high-risk areas or more sensitive activities at the far end of the lab, rather than close to the door. And this is an illustration of that. On the right-hand side, you have the entrance to the lab. Then, based on risk assessment, you have identified some low-risk activities and some high-risk activities. You will locate high-risk activities at the end of the lab. And you see the biosafety cabinets are there together with the incubators, for instance. And at the entrance, you have low-risk activities like looking at a microscope, and you also have the sink close to the door. In doing that, you reduce the risk. If there is a spill here, for instance, the people in the first part of the lab will not be exposed. Because they are still in the high risk part of the lab, if you need to evacuate the lab, you will not have to cross that space. You will have to go to a lower risk area and then to the outside. With respect to storage, we can also apply segregation and zonation principle, which is briefly to have the things that you need immediately close to you, and other things that you don't need on a regular basis, have them stored apart. Doing that, you should keep in mind that you should keep emergency supplies like spill kits, first aid materials, and so on, quite easily accessible, not necessarily in the lab, but close by. With respect to biological storage, so storage of biological agents or samples or clinical samples that you need to keep for archives for a number of years,
it's better to keep that in a dedicated place for long-term storage. And in that case, you need to also address biosecurity issues. Why? In a lab, most of the time there are people working, or you can close the lab when you don't work. Storage area, most of the time there is nobody there. And so we need to avoid that anything can be stolen there. Labeling and access limitation, those are two obligations also. The basis of labeling is biohazard signs, but you can use other useful warnings, like, for instance, clear restriction of access. You could also give some other information, like a phone number in case of problem. And then with respect of access limitation, it has to be based on risk assessment, looking also at what are the risks of some people getting in without being authorized and so on. And clearly, from that point of view, electronic access is not a requirement, not a core requirement. There are also some other options that exist, like just based on procedures, using a locker when nobody works in the lab, having human surveillance at the entrance of the building, and so on. So this has to be defined on the basis of risk assessment. With respect to surfaces and finishes, which is quite important, you should look for smooth and continuous surfaces. So that are not absorbing and that are easy to clean and thus disinfect. It's true for walls, it's true for floors, it's true for doors. And for walls, for instance, one good thing is to use you can use a normal paint, but the paints that are used in kitchens or bathrooms are usually more resistant to washing. Also, and certainly less expensive than some paints that are made for labs, I would say. Then with respect to for the floors, you can use vinyl, linoleum, tiles. These are okay if the seams and grouting do not allow accumulation of dirt. Don't think that you need epoxy. Epoxy is very expensive and very difficult to put in place. And I've seen many situations in Pakistan where people had problems with epoxy. And I can also tell you that in Europe, we don't use epoxy in laboratories, only for large-scale production, manufacturing activities. For the rest, we prefer to use vinyl, which presents a number of advantages. Furniture and equipment, again, first they need to be dedicated. You should not use a wooden table from a kitchen, for instance. They need to be robust, ergonomic, and so on. And the bench top should be water resistant to water and to chemicals, and of course also be easy to disinfect. Wood, concrete, or even tiles are okay if, again, they are properly sealed or treated. With respect to laboratory equipment, we need to respect the manufacturer's instructions and also think about electricity and other utility needs. Do you need electricity? What type of electricity? Do you need some water for that, and what type of water? Do you need to do you produce effluents that need to be connected to the sewage, and so on? And then in choosing equipment, you should also consider the costs and your needs and the cost of validation and maintenance. Also the availability of some technical people to do that. Lighting, it should be adequate for all activities. And so natural light should be okay, but it's most of the time you will need some artificial light also. Why? Because daylight is changing depending on the time of the day. Also, it's more difficult to control possible glare, and also we want to avoid to have too much solar heat. So we usually need artificial light. And in that case, you really need to think about the position of those lighting in order to be sure that they give the correct amount of light, that there is not too much glare or reflection, and also avoid that people, for instance, work with in their own shadow, which is not very interesting. Electric supply, this is not biosafety, but it's important because a number of equipment will be used in the lab. And so you need to have the right type of electricity. In Pakistan, there is one particularity is that you use different type of sockets, like you have the standard from US, from Europe, and from the UK.
So you need to have the right one and also the right power behind that. But you also need to have some emergency supply, power supply most of the time, because electricity is not always provided in a constant way. Three different options are available for that. The main one and the less expensive one is to have a electrical power supply generator, which is mostly fed by with fuel. It is a good option, but it has some limitation. For instance, it takes a little bit of time to respond, a few seconds to a few minutes, and also there could be changes in the voltage. Because of that, you might prefer some batteries, and that could be, for instance, fed with by solar panels. This would be better from the point of view of immediate supply and voltage variation, but it's more expensive and you need space for that. Not only for the solar panels if you use them, but also for the batteries themselves. And then the last system is what you call UPS, Uninterruptible Power Supply. This allows an immediate response in case of electricity cut, but it corrects the changes in voltage. Actually, it is very expensive and also highly space consuming. So it should be reserved for critical equipment and instruments. If you have a biosafety cabinet and there is an electrical shutdown, you can still manage the situation with good procedure and people being trained. But for electronics, for instance, for automated equipment that collect data, in that case, if there is a cut, you might lose a part of the data. So in that case, I would recommend to use UPS. I will not speak much about waste treatment because actually it's a very complex issue that requires specific attention. Still, you will need to think about what you want to put in place depending on the availability of some service, perhaps municipality services and so on, and some local regulations. One thing that is important to know with respect to laboratory design is that the technical option that we will choose for waste management will be very important with respect to laboratory design. For instance, if you use an autoclave, the location of the autoclave is very important. And I know that in some projects, the first thing people do, they locate the autoclave and they build the labs around that. If you have a sophisticated autoclave, you will need some specific utilities like water or steam. You will also need effluents and so on. But all that has an impact on costs, and so that needs to be specifically addressed during risk assessment. So, Javid, could you also summarize this part, please? Yes, Philippe, thank you. इस सेशन में हम जो लेबॉरेटरी को डिज़ाइन करने के जो बुनियादी ज़रूरियात है उसके बारे में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी हमारी लेबॉरेटरीज है उनमें ज़्यादातर अगर हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी जो हम आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे, अगर हम उनको भी जो है ना वो पूरा करें और उसकी बेस पे लेबॉरेटरीज जो है ना वो हम बनाएं, तो हमारे जो है ना वो मैक्सिमम जितना भी हमारा ज़्यादातर काम है वो उसमें जो है ना वो कवर हो सकते हैं और हम बाहिफाजत जो है ना वो उसमें काम कर सकते हैं। अब हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात है, ये लिस्ट आप लोगों के सामने है जो कि आगे हम जो है ना वो डिस्कस भी करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो लेबॉरेटरी का डिज़ाइन होना और उसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना जो है ना वो इन तमाम बुनियादी ज़रूरियात में से सिर्फ एक ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम एक लेबॉरेटरी को अच्छी तरीके से बनाएं और हम जो है ना वो उसमें जो है ना बाहिफाजत काम कर सकेंगे। उसमें जो है ना हमारे साथ हमने जो है ना ये बाकी अवामिल और बाकी जो अनासर है उनको भी जो है ना वो मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि इसके साथ जो है ना अगर देखा जाए तो हमारी जो बुनियादी जो बायोसेफ्टी की और अपने आप को बाहिफाजत काम करने के लिए जो अक़दामात है उसमें जो है ना उनकी भी जो है ना वो एक कलेक्ट जो है ना वो फहरिस्त है जो कि आगे जो है ना मैं 1 बाय 1 जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बुनियादी ज़रूरियात को अगर हम देखा जाए बायोसेफ्टी के हवाले से तो एक तो ये है कि हम अपनी लेबॉरेटरी में जो काम है उनको हम तकसीम करें। जो ज़्यादा खतरनाक काम है हम कोशिश करें उसको दरवाजे के
करीब से जो है ना वो की बजाय हम उनको लेबॉर्ट्री के आखिर तक ले जाएं, ताकि जो भी लेबॉर्ट्री में एकदम आएगा उनको जो है ना वो उसकी एक्सपोजर ना हो, और जो कम खतरनाक चीज है माइक्रोस्कोप देखना या इस तरह की चीजें, उनको जो है ना वो हम क्या कहते हैं दरवाजे के करीब जो है ना वो उस पे हम काम कर सकते हैं। तो हमने जो है ना वो अपने काम को उसकी नौइयत खतरा कितना है उस हिसाब से जो है ना वो हमने उसको जो तकसीम करना है लेबॉर्ट्री को, जो डिजाइनिंग है। अब उसमें जो है ना वो हमारे पास जो चीजें आप लोगों को ज्यादा जल्दी चाहिए होती है वो बेशक आप अपने करीब रखें, जो है ना वो जिसकी जरूरत इतनी नहीं है उसको जो है ना वो एक खास जगह पे लेबॉर्ट्री के आखिर में एक डेडिकेटेड जगह पे जो है ना वो उसको रखा जाए, और उसके लिए उधर जो है ना वो एक स्पेस जो है ना वो बनाई जाए। अब इस दौरान जब आप ये स्पेस और ये सारी चीजें जो है ना, ये जो इलाका आप लोग मुख्तस करेंगे लेबॉर्ट्री के लिए, उसमें ये चीज जरूर याद रखें कि आप लोगों ने मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखना है कि आप लोग मुस्तकबिल में इस लेबॉर्ट्री को कहाँ देखते हैं। अब उसके हिसाब से जो है ना ये सारी चीजें आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का सैंपल कहाँ से आएगा, कहाँ से जो है ना वो आप लोगों का जो वेस्ट है वो कहाँ से जो है ना वो निकलेगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब इस कोशिश की जाए कि जब आप लोग बाउंड्री को डिजाइन करते हैं तो उसकी जो स्पेस और जो इलाका है वो सारी चीजें ऐसी हो कि वहां पे आप लोग आसानी से वहां पे अब जो हरकत है वो करे, आसानी से उसमें जो है ना वो काम कर सके। क्योंकि इस दौरान जो है ना एक तो ये है कि जो एक्सीडेंट है उनके लागू होने के जो है ना वो चांसेस जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से जो है ना वो कहते हैं कि अगर आप जो खतरनाक चीजें हैं उनको लेबॉर्ट्री के आखिर में रखा जाए, और जो कम खतरनाक चीज हैं उनको जो है ना वो लेबॉर्ट्री के एंट्रेंस की साइड पे जो है ना वो आप लोग, अगर मैं इस लेबॉर्ट्री को आप लोगों के सामने पेश करूं तो आप लोग देखें सिंक और ये माइक्रोस्कोप और ये सारी चीजें दरवाजे के एंड पे हैं, लेकिन अगर मैं कल्चरिंग और ये सारी चीजें कर रहा हूँ इंक्यूबेटर बायोसेफ्टी कैबिनेट, वो मैंने बिल्कुल लेबॉर्ट्री के आखिर में रखा है ताकि लोगों को जो है ना वो उससे खतरे जो है ना वो कम हो सके। अब उसमें जो है ना वो कोशिश की इसमें जो चीजें आप लोग ये उसको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, तो इस दौरान जो हमारे इमरजेंसी चीजें हैं, स्पिल किट हो गया या फर्स्ट एड की किट हो गई, ये आप लोग कोशिश करें कि किसी अच्छे ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे एक बंदा आसानी से उसको जो है ना वो ले सके इमरजेंसी की सिचुएशन में। और बायोसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो जो भी आप लोग की खतरनाक जो जरासीम है, जब आप लोग उसको स्टोर करते हैं मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, तो उसको जो है ना वो एक खास जगह पे रखा जाए कि जहाँ पे जो है ना वो लोगों का एक्सेस जो है ना वो वहां पे लोगों की जो है ना वो जो रसाई है वो मुमकिन ना हो, और सिर्फ वो बंदा वहां पे जा सके जिसको जो है ना वो ऑथराइज किया हो, जिसकी जो है ना वो ड्यूटी लग गई हो। अब इस दौरान जो है ना वो कोशिश ये भी की जाए लेबॉर्ट्री की डिजाइनिंग में कि हर चीज को जो है ना वो प्रॉपर लेबलिंग की जाए। में एक चीज ये बात माइंड में रहे, तो आप लोग फॉर एग्जांपल ये चीजें अपने बायोलॉजिकल जो थीम वगैरह रखते हैं, तो वो भी आप लोग इतना इंफॉर्मेशन रखें कि जो बायोसिक्योरिटी का मतलब है गैर जरूरी बंदा जहाँ पे उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए, वो भी अगर जाए तो कम से कम उसे वहां पे वो फुल इंफॉर्मेशन ना मिले। तो उसकी वजह से वो WHO इस बात यही कह रही है कि आप लोग खतरों की तशखीस करें और उसके हिसाब से जो है ना वो आगे अपने इकदाम जो है ना वो इख्तियार करें। जितनी भी आप लोग के वर्क बेंचेस है, जिस बेंचेस पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो इंतहाई जो है ना वो स्मूथ हो, उसमें जो है ना वो दरारें ना हो कि जहाँ पे जरासीम जो है ना वो तैर सके। इस वजह से जो है ना वो कोशिश की जाए कि उसको वो ऐसे फ्लोर हो के वहाँ पे अच्छी तरीके से जो है ना वो सफाई हो सके। और उसके लिए जरूरी नहीं कि हम जो ज्यादा एक्सपेंसिव जो एपॉक्सी के जो पैंट्स है उनको जो है ना वो ले और उसकी थ्रू जो है ना वो हम फ्लोर्स को और इन चीजों को जो है ना वो रंग दे। हम वेनाइल, लिनोलियम या टाइल्स, सिंपल पैंट्स जो हमारे किचन और बाथरूम के हैं उससे हम काम चला सकते हैं। फर्नीचर का भी सेम जो वर्क बेंचेस का प्रिंसिपल है कि उसको अच्छी तरीके से हम साफ कर सके, वो वाटर रेजिस्टेंट हो, उस पे कोई जो है ना वो कोई महलूल या कोई चीज जो है ना वो जज़ब ना हो सके, उस मटेरियल का बनाओ कि हम उनको पानी से भी अगर साफ करें, डिसइंफेक्टेंट से भी साफ करें, वो चीज उसमें जो है ना वो जज़ब ना हो। सेम प्रिंसिपल उसूल जो है ना वो हमारे पास लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट के लिए भी है कि हम जो है ना वो जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट के लिए स्पेस जो है ना वो एलोकेट करेंगे, वो भी हमारे पास इतना स्पेस हो कि जो अगर मुस्तकबिल में भी हम मजीद इक्विपमेंट और ये सारी चीजें आलात जो इस्तेमाल करेंगे लेबॉर्ट्री में अगर ला सके, तो उनके लिए वो स्पेस ऑलरेडी जो है ना वो हमारी प्लानिंग में जो है ना वो मौजूद हो। और इस दौरान जो है ना वो जो लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट है वो उसकी जो अगर वो खराब हो जाए तो उसको मेंटेन करना, उसको दोबारा सही करना जो है ना वो भी हमारी जो है ना वो डिजाइनिंग में और इन
चीज़ों में जो है ना वो हम इस चीज़ को भी जो है ना वो मद्देनज़र रखें। लाइटिंग के हवाले से अगर जो है ना वो आप लाइट का भी अगर मिसाल के तौर पे आप कोई लाइट वगैरह इंस्टॉल भी कर रहे हैं, कोई भी लाइट हो, तो वो उसकी पोजीशन ऐसी हो कि आप कम से कम उसका साया जो आप अपने साये में जो है ना वो काम ना कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने लाइट को इस तरह बनाया ऊपर के जो साया है वो मेरी ही काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मेरे वहां पे काम करना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है ना मुख्तलिफ ममालिक से ये इक्विपमेंट लेते हैं। अब हम कोई यूएस से है, कहीं जहाँ से भी हम इक्विपमेंट लाते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो सॉकेट्स वगैरह हैं वो भी माइंड में रखें और उसी हिसाब से अपने सॉकेट्स और ये सारी चीजें जो है ना वो अपनी लेबोरेटरी में जो है ना वो हम इंस्टॉल करें, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो एनर्जी की सप्लाई इतनी भी वोल्टेज उसकी रिक्वायरमेंट हम उनको जो है ना वो करें इंस्टॉल करें। अब इस दौरान है ना वो ज़ाहिर बात है इन तो उसकी जो है ना का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसका मसला ये कि उसमें अक्सर जो है ना जब बिजली चली जाती है तो एक शॉर्ट ब्रेक आ जाता है जिसमें ये पीसीआर या बायोसेफ्टी कैबिनेट ये कुछ लम्हों के लिए वो बंद हो जाता है। तो वो कोशिश की जाए कि जो हमारा यूपीएस है या जो हमारे जो सोलर बैटरीज है जो सूरज के थ्रू जो है ना वो चार्ज होती है, उनको जो है ना वो हम रख सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये कि वो जरा एक्सपेंसिव है और उनको लिए जो है ना वो स्पेस भी चाहिए। इस वजह से जो ज्यादा क्रिटिकल, जो ज्यादा जो है ना वो ऐसे इक्विपमेंट के जो बिजली की सप्लाई की जो है ना वो शॉर्ट ब्रेक से जो है ना वो उनका हमारा पूरा साइकिल पीसीआर आप लोग ले ले, बिजली चली जाती है वो सारा साइकिल जो है ना वो स्टार्ट करना पड़ता है। उन ऐसे हालात में हम यूपीएस जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक वेस्ट जो है ना ट्रीटमेंट की बात है, वेस्ट ट्रीटमेंट बजाते खुद एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक फील्ड है। हम एक स्लाइड में जो है ना ये सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जो है ना वो माइंड में रखिए कि जो भी आप लोगों का वेस्ट होगा जो आप लोग की लेबोरेटरी में जनरेट होता है, हमेशा उनमें जो भी आप लोगों के खतरात है उसकी तशखीस करके उसके हिसाब से आप लोग जो है ना वो उसके हिफाजती इकदाम करें। मतलब फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव है तो ऑटोक्लेव को जहाँ पे उसकी बाकायदा प्रॉपर लोकेशन हो कि कहाँ पे ऑटोक्लेव को रखना चाहिए और उसकी जो है ना वो प्रॉपर मेंटेनेंस और ये सारी चीजें हो। और अगर आप लोगों ने वेस्ट को जो है ना वो अपनी लेबोरेटरी से बाहर किसी और जगह पे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना तो उसकी भी लॉजिस्टिक और वो सारा कास्ट वगैरह आप लोगों की ऑलरेडी जो है ना वो कैलकुलेटेड हो, और ये सारी चीजें उसके लिए जो है ना वो स्पेस और ये जहाँ पे आप लोगों ने वेस्ट को स्टोर करना, ये सारी चीजें आप लोग के लेबोरेटरी डिजाइनिंग के दौरान जो है ना ये सारी चीजें आप लोग के माइंड में होने चाहिए। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर फिलिप, प्लीज द फ्लोर इज योर्स। Thank you very much, Abel. So during this last part of this first session, we'll speak about ventilation mainly. I told you that ventilation is probably the most tricky, the most difficult to solve of the core requirements. Why do we actually need some ventilation? First, we need it to obtain a suitable temperature and humidity in the Should we ask question now or at the end of the session? No, you are invited to ask your question via the chat box. So you should have it's for the comfort of the lab workers, but also for a proper functioning of some of the equipment, and also for suitable experimental conditions. So you need some control of temperature and humidity, and also to limit environmental contamination, because you could have bacteria and spores coming from outside, and if the climate inside of the lab is hot and humid, in that case you might have those contamination might progress much more. You also need some real ventilation for hygienic purpose, as in any room where there are people working, but also to eliminate volatile substance and aerosol particles if some are generated, which is the case in many labs. And so in that case, you need in some way to move away the dirty air and replace it by some clean air. And so for that, or in general, you need some ventilation and also possibly some air conditioning. Actually, with respect to ventilation and air conditioning, there are some conflicting situations and needs.
First, laboratories are in principle quite closed environment, not completely closed, but it's not in the open. But you need to replace dirty air by some clean air. So it cannot be totally closed from that point of view. Then beside the heat from the climate and also from our human activities, you also have quite a lot of heat produced by the equipment in the lab, like biosafety cabinets, like freezer, incubators, and so on. And you need to keep moderate temperature. Also, in Pakistan, you have In Pakistan, you have a high level of humidity in the air, while in the lab, the air should be moderately dry. And finally, you need some ventilation in the lab to remove the dirty air, but also you need to limit the turbulences. You need to have to limit airflows controls, and because of that, it's quite difficult to find a solution in principle. But you'll see that there are some solutions and some simple solutions. But anyways, in any project of constructing labs or revamping lab, you should really look at this specific issue of ventilation. What are the options for ventilation? The most immediate one, I would say, is natural ventilation. It is cheap and it's easy. However, it's not necessarily suitable for biological labs, for a number of reasons. The risk of contamination, and especially in a country like Pakistan because of the climate. Also because of the climate conditions themselves, which are not good to work a long day on experiments and so on. And also because of risk of non-controlled airflows and turbulence. If you have natural ventilation, the wind may provoke some disturbance of the air inside of the lab. And this is something that we want to avoid. And anyways, even if you use natural ventilation, you will possibly have the need for some cooling and humidity control. Still, ventilation can be used. For instance, if you ventilate the lab at moments where nobody works. In that case, it could possibly be used. But most generally, you will also need a more active option. The easiest one, I would say, and it's a very efficient one, is you're using an exhaust fan. That means a fan that will take the air from the lab and send it to the outside. It's also easy and cheap. If you want that to work, we need to allow some air in. If you take dirty air from the lab, there will be a negative pressure in the lab, and you need some air to replace the air that has been exhausted. Most of the time, it's not a problem in a lab because you have some air that can come in the lab under the doors through a number of small cracks and so on. If it's not the case, if there is not enough air that can come in, you could use some grills like on the picture, some ventilation slats to facilitate that. Also, if you use an exhaust fan, it's possible to control the airflow. That means to have the airflow moving from one part to the other. For instance, from clean to dirty. Still like that, if you ventilate, you may still need some separate cooling system. Then the third option, that's what we call HVAC, which means heating, ventilation, and air conditioning system. That's a more complex system that provides both ventilation and air conditioning, but it's complex and expensive to install, but also to operate because it requires quite a lot of energy and also quite a lot of maintenance. And definitely using an HVAC system is not a core requirement. So before choosing such a solution, you need to be sure that you really need it and you can afford it. Otherwise, an exhaust fan would be the most generally available and recommendable solution. This is definitely not a good option for laboratory ventilation for two reasons. Because first, it mixes the air in the lab, and so it doesn't move the air from one place to another. It creates non-controlled air movements, and so if there is some nasty products in the air, you don't have any control of that. Also, there is no air renewal. It will just mix the air in the lab, but there is no replacement of dirty air.
So I just spoke about ventilation. In addition, you might need some cooling and possibly heating, but in Pakistan it's mostly cooling systems. There are many different types of models. I just put there 2 pictures. The first one is one that we put on the wall, and the second one is one that we can put in a false ceiling. There are also some mobile one and different other options. They can also be called split units or fan coil units. Actually, this system only provides air conditioning. That means they cool, possibly heat the air, and also have reduced the humidity level. But they do not provide any air change or air removal. Actually, they take the air from the lab, they cool it down, it takes and then they blow it back into the lab. So there is no ventilation effect in the lab. Also, this kind of system, because it pushes the air, it could create some exposure of the personnel who works in the lab, and it could have an impact on the proper functioning of biosafety cabinets if you have one. So it's very important to locate them very well in the lab. For instance, you should not have such a unit like the one on the wall above a bench with the people working in front of the bench, because the air will be pushed through the bench toward the people. This is definitely not the best option. So Javed, could you also summarize this part, please? Yes, sir. ओके हमारा जो है सेशन का जो है ना इस वेबिनार का आखिरी सेशन है। इसमें हम जो है ना वो एनवायरनमेंट के बारे में जो है ना वो जो हमारा लेबॉरेटरी का जो माहौल है उसके बारे में जो है ना हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसमें ये है कि हमने अपने लेबॉरेटरी में जो टेम्परेचर है या उसकी जो नमी है वो हमने प्रॉपर तरीके से जो है ना वो रखनी है कि जो काम करने वाले हैं वो भी आसानी से काम कर सके, और जो हमारी इक्विपमेंट के लिए जो ह्यूमिडिटी और ये चीज़ें चाहिए होती है वो भी जो है ना हम उस ज़रूरत को भी जो है ना वो पूरा करें। दूसरा ये कि वो ह्यूमिडिटी और वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो ऐसी हो कि उसमें जो है ना वो हमारे ये जो फंगल स्पोर्स और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो जनरेट ना हो और इस तरह की कंटेमिनेशन जो है ना वो ना आए। अब उसके लिए जो है ना वो वेंटिलेशन का जो एक मकसद ये है कि हम जो हमारा लेबॉरेटरी की जो हवा है वो साथ-साथ जो है ना वो चेंज होती रहे, तब्दील होती रहे। नई हवा जो है ना वो हमारी लेबॉरेटरी का हिस्सा बनता जाए और पुरानी हवा जो है ना वो हमारी लेबॉरेटरी से निकलती जाए, ताकि एक हाइजीनिक, एक साफ-सुथरा माहौल हमारे लेबॉरेटरी के अंदर जो है ना वो हो। अब उसमें जो है ना वो एक मकसद ये भी है कि हमारे जो ऐसे केमिकल जो कि हवा में उड़ने वाले हैं वो भी जो है ना हमारे साथ-साथ जब अगर हमारे पास हवा का आमदरफ्त हो तो उससे जो है ना वो हमारी ये इस तरह के केमिकल भी हमारे लेबॉरेटरी से जो है ना वो निकलते हैं। अब इसमें जो है ना एक तो ये है कि जो हवा की आमदरफ्त का जो मकासद है उसमें जो है ना वो हमारा एक तो ये है कि जो गंदी हवा है उसको जो है ना हम साफ हवा के साथ जो है ना वो तब्दील कर सके। जो हमारा लेबॉरेटरी की जो टेम्परेचर है उसको हम मुतवाज़न तरीके से जो है ना वो रख के, और दूसरा जो है ना हमारी लेबॉरेटरी की जो ह्यूमिडिटी है और वो सारी चीज़ें उसको भी जो है ना वो हम मेंटेन कर सके। अब इसमें जो है ना वो एक चीज़ जो वेंटिलेशन में जो मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि जो हमारी हवा का जो आमदरफ्त है वो एक ख़ास तरीके से एक ख़ास हद तक जो है ना वो हमारे लेबॉरेटरी में जो है ना वो आती रहे और वहाँ से जो है ना वो निकलती रहे। इस दौरान कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो हवा हमारी जो लेबॉरेटरी की जो हवा है वो हमारे कंट्रोल से जो है ना वो बाहर हो जाए। अब इसके लिए जो है ना जो लेबॉरेटरी में जो हवा का आमदरफ्त है वो 2 तरीकों से है। एक कुदरती तौर पे है और एक हमारे पास कुदरती तौर पे ये है कि हम बस खिड़कियाँ जो है खोले और इस तरह की जो है वो हवा आती जाए। अब उसमें जो है ना मसला सिर्फ और सिर्फ ये कि जो हमारे बाहर की कंट्री जो हमारे के वो चीज़ें जो है ना वो आसानी से हमारे लेबॉरेटरी का जो है ना वो हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि बाहर की जो है ना वो खिड़की से बाहर जो एनवायरनमेंट है वो हमारी लेबॉरेटरी की जो है ना वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है उसका मुताबिक हो। तो कुदरती हवा में जो है ना थोड़े से जो है ना वो मसले हैं।
अब अगर मसनूई हवा हम उनके लिए जो है ना वो एग्जॉस्ट फैन आप लोग लगा सकते हैं, उसमें जो है ना वो एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो क्या करेगा कि एक साइड से जो है ना वो लेबॉर्ट्री से हवा को खींचेगा और जो दरवाजों के नीचे से जो हमारे छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स और ये सुराख वगैरह होते हैं उसके जरिए से हवा हमारी लेबॉर्ट्री में अंदर होती जाएगी। तो ये एक जो है ना वो हवा का आमदरफ्त जो है ना वो चलता रहता है। अब इसमें जो है ना वो इस चीज का ख्याल रखा जाए कि जो हवा का आमदरफ्त है वो क्लीन टू डर्टी हो। क्लीन टू डर्टी का मतलब कि हवा का जो एंट्रेंस से जहां से हवा ने अंदर जो है ना वो लेबॉर्ट्री के अंदर जाना होता है वो दरवाजों की तरफ से हो, और जहाँ पे हम वो लेबॉर्ट्री में मैंने आप लोगों को जो ग्रीन और येलो और रेड दिखाया था कि जहाँ पे आप लोग खतरनाक जरासीम से काम करते हैं वहां पे आप लोग इस तरह का जो है ना वो एग्जॉस्ट के हमारा जो हवा का आमदरफ्त है वो क्लीन टू डर्टी हो। अब उसके लिए जो है एक सिस्टम और भी इस्तेमाल किया जाता है, हैविक। अब हैविक का जो है ना वो ये है कि वो उस पूरे जितनी भी लेब्स है उन सबको जो है ना वो हम एक सेंट्रलाइज जो है ना वो एयर कंडीशन के साथ जो है ना वो कनेक्ट करे, लेकिन उसका मसला ये कि वो एक्सपेंसिव है और हमारी लेब की बुनियादी जरूरत भी वो नहीं है। ये पंखा जो है ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बायोसेफ्टी कैबिनेट और इन चीजों में काम कर रहे थे तो हमारी बायोसेफ्टी कैबिनेट और सारी चीजों का जो है ना वो हवा का आमदरफ्त वो सारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब कुछ जो है ना इस तरह की एक कूलिंग जो है ना कूल एनवायरनमेंट को कूल रखने के लिए एसी जो है ना वो फिट किया जाता है। अब उसमें जो है ना वो एक अगर आप लोग इसको देखें ये हमारा जो है ना वो छत के साथ कनेक्टेड है और ये हमारा ये वाले एसी हमारी दीवार के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें जो है ना वो एक इसका जो है जो नुकसान है वो ये है कि हमारी लेब के अंदर की जो हवा है उसको जो है ना वो तब्दील नहीं करता कि ताज़ा हवा आती जाए और जो है ना वो जो गंदी हवा है वो निकलती जाए। वो सिर्फ आप लोगों का जो हवा का लेबॉर्ट्री से निकालने वाला सिस्टम है उसके लिए आप लोगों को जो है एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, और ये सिर्फ एनवायरनमेंट को कूल रखने के लिए और उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इसकी इंस्टॉलमेंट के दौरान जब आप जहाँ पे आप लोग इसको लगाएंगे तो कोशिश करें कि इसके ये बायोसेफ्टी कैबिनेट के करीब ना हो, कि जहाँ पे आप लोग अगर जाहिर बात है बायोसेफ्टी कैबिनेट एक हवा के थ्रू प्रिंसिपल पे जो है ना वो काम कर रहा होता है, और ये जो एसी वगैरह और अगर उनके फ्रंट पे लगे हों तो वो उनका हवा का जो बायोसेफ्टी कैबिनेट में आमदरफ्त है वो सारा कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप लोग जो है ना मजीद खतरे में जो है ना वो पड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सो फिलिप, द फ्लोर इज योर। Thank you, Dr. Javed. Thank you, Philippe. Everyone who has asked questions, we have noted them down. We will be having a third session that's just going to be dedicated for question and answers. So we will put the questions on hold till then. And just a reminder, there is an evaluation link in the chat box. Please fill it out, and we will also be sending you the post quiz for this session. And please don't worry if your question was not answered today. We have noted it down and it will be answered in the next session. Thank you everyone who attended today, and we will see you on 26th October.